Assalamualaikum students. I hope you all are fine and enjoy good health. Welcome to my lecture number 7, which is about the history of atom. Here we talk about what is the history of the atom and how atoms exist, and what are the different philosophers said about the atom. So we talk about history of atom, the Greek ideas, and also the Darwin's theory. So first of all, who is the one who tell us about the history of the atom? तो हिस्ट्री ऑफ द एटम के हवाले से सबसे पहले जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस डेमोक्रिटस जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि मैटर जो है वो बना हुआ है बहुत ही छोटे और इनडिविजिबल पीसेस जिन्हें हम नाम देते हैं एटम्स का। तो सबसे पहले जो एटम का तस्वुर दिया था वो दिया था डेमोक्रिटस ने। तो डेमोक्रिटस जो था वो हमारे पास ग्रीक फिलोसफर था जिन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम एटम के हवाले से बहुत कुछ बच्चों को बता रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बताते कि व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ द एटम, कि ये इस एटम का तस्वुर दिया किसने। तो सबसे पहले जो है वो एक फिलोसफर था जिनका नाम डेमोक्रिटस था, उन्होंने दिया था और जिसने ये बताया था कि एटम जो है वो किससे बने हुए होते हैं, वो बहुत ही टाइनी इनडिविजिबल। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की है कि एटम होते क्या हैं। उसने जो एटम की डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी कि इट इज द टाइनी indivisible. Indivisible means that cannot be divided, so it is indivisible. So in tiny indivisible particles we call it atoms. फिर यहाँ पर बात खत्म हो गई। फिर इसके बाद 1800 में, ठीक है, 1800 में हमारे पास जो हैं वो आए डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस के बाद जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन अब जॉन डाल्टन जो हैं वो क्या है? जॉन डाल्टन ने जो एटम के हवाले से बताया तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, विद द केमिकल रिएक्शंस टू प्रूव एटम्स एग्जिस्ट। तो लेट 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट पास्ट हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस एट द लो प्रेशर। अब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया क्या? उसने जो है ना हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की। हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। जब उसने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की और लो प्रेशर दिया गैसेस में से, तो उसने देखा कि एटम जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। इन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि दीज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट द एटम्स आर एक्चुअली डिविजिबल। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रिटस ने जो बात की थी वो ये की थी कि एटम्स जो है ना वो इनडिविजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की थी इनडिविजिबल की, लेकिन जब जॉन डाल्टन जब आया तो उसने ये देखा कि भाई ये तो है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना इन गैसेस में से और लो प्रेशर में से, तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से उसने ये प्रूव किया कि ये जो एटम्स जो हैं ये डिवाइड हो रहे हैं। तो उसने क्या देखा कि इनसाइड द एटम दे डिस्कवर्ड द स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब वो स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन कौन से थे? वो थे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और क्या उसने देखा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। A proton was measured to be 1836 times heavier than the electron. अब उसने ये देखा कि ये जो हमारे पास प्रोटॉन है
ये 1836 टाइम जो है वो हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन। तो फिर अब उसने क्या नतीजा निकाला, उसने ये नतीजा निकाला कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। तो फिर यहाँ से बात शुरू हुई थी इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी में किसका हाथ है और ये कैसे डिस्कवर्ड हुआ। तो ये सारी इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे हम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, this is discovery of electron. So where we talk about J.J. Thomson and the discharge tube experiment, यहाँ पर हम बात करेंगे J.J. थॉमसन की, क्योंकि J.J. थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिस्कवर किया था। तो अब हम देखेंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया था। यहाँ पर ये बात तो तय हो गई थी कि जो एटम है वो डिविजिबल है, क्योंकि जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं गैसेस में से और उसे जो है वो लो प्रेशर देंगे, तो ये जो एटम्स जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और वो एटम्स डिवाइड किस में होते हैं वो मैंने अभी आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि वो एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये बात हो गई होगी क्लियर आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, किस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट किया गया और कौन साइंसदान थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो है किरदार अदा किया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जे थॉमसन की, जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वही बात की कि वेरी हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड टू द गैस एट अ वेरी लो प्रेशर इनसाइड अ गिलास ट्यूब। ठीक है, इसकी मैं अगर आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं, तो इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें, ठीक है, ये आप समझ लें ये हमारे पास कोई डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कैथोड और इस साइड पर हमारे पास मौजूद है एनोड। ठीक है, ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास एनोड। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि उसने जब पास की इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, रेज जो हैं वो इमिट हुई थी फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड। हम कैथोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव होता है, जबकि एनोड जो है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो उसने नेगेटिव में से जो है वो रेज इमिट की, तो दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज क्यों बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात आएगी तो हम इसे कैथोड रेज बोलेंगे। हम कैथोड रेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रेज हैं वो इमिट हो रही थी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। ठीक है, ये हमारे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ से जो है वो रेज इमिट होना शुरू हुई थी। ये मैं आपको रेज बनाकर दिखाऊं तो ये इस तरह से ये रेज जा रही हैं और ये जा रही हैं इस पॉजिटिव की तरफ। अब हुआ क्या, Thomson passed these rays through electrically charged plates. The rays bend towards the positive plate, providing the carrier negative charge. अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि ऑलवेज जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो रही है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और जो रेज हैं वो कहाँ से पास हो रही हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, वहां पर अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो रेज हैं वो बेंट हो गई हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिसकी वजह से ये बात जाहिर कर रही हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। He used the magnetic fields to calculate the mass to charge ratio. अच्छा, अब यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि कैथोड रेज आर एक्चुअली द स्ट्रीम ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, कैथोड रेज होती क्या है, अगर मैं आपको कैथोड रेज की डेफिनेशन यहाँ पर अगर लिखकर दिखाऊं तो कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज ठीक है, ये कैथोड रेज है हमारे पास।
तो कैथोड रेज हैं क्या, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है वो पूछ ली जाती हैं लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता क्योंकि ये बुक में मौजूद नहीं है। तो कैथोड रेज आर एक्चुअली दी स्ट्रीम, it is the stream of material particles, stream of material particles found in all the elements, found in all elements। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपने कैथोड रेज की याद रखनी है कि कैथोड रेज आर एक्चुअली द स्ट्रीम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स फाउंड इन ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं, देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो हम ले लेते हैं। Okay, there will be no question, but if anyone don't like my teaching, so you would not be allowed. You must leave the this lecture, and if you think my lecture is beneficial, then you must join me. Otherwise, you must leave it. Simple. I think my writing is visible here because I am using the whiteboard, and it is little bit tough to write here, but I will try my best to teach in a best way. So I think my writing is clear, but it's actually the whiteboard that I use is that it is very tough to write over there in this board. Okay, I will try my best to use the text because I have received the messages that you are clear here, and okay, okay. I actually use the pen and also the whiteboard, and it is a little bit tough for me to write over here on that board. But next time I will, of course, using the text or type myself to better understand for you guys. Okay, I will try my best to use the typing so that you can understand very easily, but I will try my best to teach you well. Okay, if you have any question, you can definitely ask me, and daily in I will be live at 8 p.m. If you have any queries or questions, you will definitely ask to me. Okay, let us move towards the next. Okay, next is the we talk about discovery of proton. I know my writing is not clear over here because I use the whiteboard, which is very tough, and I really feel like that it has been tough for me also to type here because I use the pen actually. So next time I will type something so that you guys
learn better. Okay, now we will talk about the discovery of proton. So discovery discovery of proton. So what is the proton and who discovered it? So first of all, we talk about the scientist who discovered the proton. So actually, Hans E. Goldstein. E. Goldstein. E. Goldstein. He was the first one who used a discharge tube with a perforated cathode. Okay, actually, he observed the new rays moving in the opposite direction to the cathode rays. So, what he discovered? He discovered that these rays pass through the holes in the cathode, okay, creating a glow called the canal rays. So, what is about canal rays? Here he used the term canal rays. Canal rays or anode rays. We also say that canal rays called anode rays. These rays carry a positive charge. As we talk about later, previously I tell you about anode and cathode. Cathode has negative charge and anode has positive charge. So this is the positive charge, and their particles changed depending on which gas was used inside the table. Here he used the term that the properties change depending on the gas inside the tube, because here is a discharge tube and inside the discharge tube there is the gas particles. Here there is the gas particles. Okay, I will show you here. This is the gas particles. These gas particles actually, here the properties depends only on the gas used inside these tube. But in 1997, Rutherford proved that the hydrogen nucleus is present in the other nuclei as basic building blocks. Protons are fundamental positive particles of all the elements. So protons are basically the positive charge. So here we use that protons has positive charge. Okay, okay. Tell me what are your doubts. So I clear your doubt first. Then what are your doubts about my this lecture? Actually, I am a teacher, an international teach the whole of the world who would like to join my lectures. And I am not only teach a specific country, I am teach the whole world. So anyone from the whole world, they are most welcome. And I am not only specify the specific countries or specific place to join me. So this is an international place or international platform where I teach the whole of. Okay, so your question is, why does valence shells maintains valency? We talk it about in chemical bonding. So I am here in the chapter number 2. So here this chapter number 2 is about the atomic structure. Here we only talk about the structure of the atoms, and when we move towards the chemical bonding we will discuss the valence shells also. So here the if you have a relative question to this chapter or this topic, then you definitely ask me about that.
shell or chemical bonding and the ionic bond and the covalent bond, then this is not the topic. It's clear. Okay, so move towards the next. The next is discovery of neutron. Okay, we will move towards the discovery of okay. Discovery of neutron. Discovery of neutron. So first we just talk about the discovery of electron and discovery of proton. Now the discovery of neutron. And when we talk about the discovery of neutron, we will talk about the James Chadwick. James Chadwick. Who is the James Chadwick who discovered the neutron? So James Chadwick talk about that the protons and electrons alone could not account for the total mass of an atom, because he said that the nucleus is very much heavier, so we cannot rely that only the protons and electrons are present. There's subatomic particles also available in the nucleus which make it heavier. So in 1933, James Chadwick discovered a third fundamental particle called the neutron, called no electrical charge. He discovered that the rays are not bent to any side, means not towards the positive side, not towards the negative side. So it carries is almost equal to the mass of proton. And he also discovered that the mass of proton, mass of neutron. So now we have three fundamental particles in every atom, that is proton, electrons, and neutrons. And the short question that oftenly come in the board exam is that neutrons reside inside the nucleus alongside the protons. Collectively, they are called nucleons. So I will show you the diagram of nucleons. Where is the nucleons? So here you will see an atom, and this one is the nucleus of an atom. Here it contains protons and neutrons. So their proton and neutron collectively called as nucleons. We call it nucleons. Now we will take the. Have you any question? Then you may ask. Okay, let us move towards the next. Subatomic particles properties. So here we will discuss about the chart about the mass of electron, the mass of proton, and the mass of neutron, which is very much important and oftenly come in the board exams. So you must have to memorize the mass of the subatomic particles of electrons, protons, and neutrons. So first of all, we talk about the electrons. What are the mass of electrons? So basically, the mass of electron, if we talk about, is 9.109 multiplied 10 raised to power minus 31 kg. Okay, so this is the mass of electron. Now we talk about the proton, and it has the mass 1.6
673 multiplied 10 raised to power minus 27 kg. Okay, now we will talk about neutrons. Neutrons. If you talk about the neutrons, it has the mass 1.675 kg. If we comparison between the electron, proton, and neutron, we will see that here is nearly equal. If we see that the proton has 1.673 multiplied by 10 raised to power minus 27, and similarly the neutron have only 1.675 multiplied by 10 raised to minus 27. So these protons and neutrons both have equal masses, nearly equal masses. But if we talk about the electrons, its mass is very much less than that of the protons and neutrons. It has the mass nearly 9.109 multiplied 10 raised to power minus 31, which is very much less. Particles properties, there it is very much important question which often came in the board exams. You must have to memorize these masses. Okay, so we have learned about the history of the atom and the discovery of subatomic particles. If you have any queries or questions, so I first have to take the questions. uh, yes, what is with your forced accent? Sorry, Nebore, I don't understand very well. I don't know what you want to ask me. What is with your forced accent? I don't know what. So may I can understand it right. Okay, if you have any question regarding the history and the subatomic particles, you may ask, and I am. If you want to join my this lectures, you must welcome here and join my lecture, because this is an international platform where everyone is to be welcomed to join my channel. If you have any queries, you must ask from me, and I am here for you to answer every question. Okay, so um okay. So this is I am finished my this lecture, and before finishing, if you have any issue, any question related to my this live lecture, you may ask. Okay, dear students, do you like me to come live daily at 8? You agree? Please write in the chat so that I can understand that you want.
Do you want me to come daily at 8 so that I will be a live lecture, take live lecture daily at 8. So if you want me that I really come and join and give you a live lecture daily at 8. Quickly answered. Okay, students, thank you for your time, and I hope you will enjoy my lecture. Text type so that you can understand easily what I want to uh, give you a lecture on that topic. Okay, because I use the whiteboard, which is very much tough for me to write it with pen. So um, it's difficult also for me to write on it. But next time I will just say typing text type so that you can easily understand. Okay.